Hello students, welcome to DHAL SIR classes. We have already discussed the Malinowski and उसकी जो सीक्वेंस है मालिनोस्की के बाद हम लोग हमेशा रेडक्लिफ ब्राउन। तो रेडक्लिफ ब्राउन वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जिसको आप सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हो, और ब्रिटिश के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जितने भी फिगर है, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डोमिनेंट एंड प्रोमिनेंट फिगर Radcliffe Brown, and he's also considered as who has given the idea of structural functionalism, and he also been convinced and impressed by Durkheim's idea of structural functionalism. Why the idea of Radcliffe Brown is important? Because he's also given that how the structure and function both are important to understand the society. So if you read about theories from Durkheim's perspective, it can be functionalism. It is from the idea of Levi-Strauss, it is structuralism. But here Radcliffe Brown explains that both structure and function are important to understand the society. So anthropology में या जो मानव विज्ञान को पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हो या सोशियोलॉजी में, और ये थिंकर को दोनों जगह पे इम्पोर्टेंस इसलिए है because you understand that how Radcliffe Brown has been one of the dominant figure to clarify the social structure with relations to its function. और इनकी भी जितने भी बुक्स इम्पोर्टेंट वो आप याद रखेंगे, बहुत सारे आपको MCQ में आता है, दिस बुक रिटन बाय होम, सो यू मस्ट रिमेम्बर the important books written by Radcliffe Brown. The distribution of native tribes in part of Western Australia. This is one important book written in 1912. Three Tribes of Western Australia, 1913. Andaman's Islanders, a study in social anthropology, 1922. Arrangements of stones in Australia, 1926. Social Organization of Australian Tribes, 1931. Structure and Function in Primitive Society, that is American Anthropologist, 1935. On Joking Relationship, किनशिप में एक जोकिंग रिलेशनशिप है जिसको इन्होंने जर्नल इंटरनेशनल अफ्रीकन इंस्टीट्यूट 1940 में पब्लिश किए थे। फिर नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी 1948, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज। सो ऑल दीज बुक्स आर इम्पोर्टेंट ब्राउन। उनकी जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एंड थ्योरी वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने आपको कहा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में बात करते हैं, संरचना और प्रकार्यवाद, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, प्रकार्यवाद के क्या उनकी रेडक्लिफ ब्राउन की क्या मत है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर क्या समझते हैं उनके हिसाब से, फिर सोशल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्म, ये दोनों एक स्टेबल, एक अनस्टेबल, एक चेंजेबल, एक फिक्स्ड, ये सब बातें भी डिस्कस करेंगे। फंक्शनल यूनिटी जिसको आप कहते हैं, जो कलेक्टिव, जो किसी भी सोसाइटी की या इंस्टीट्यूशन की यूनिटी को आप फंक्शनल पर्सपेक्टिव में देखना चाहते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। कंप्लीमेंट्री फिलिएशन, जोकिंग रिलेशनशिप, पार्ट ऑफ द किनशिप स्टडीज, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल, एंड अंडमानीज शेयर जो ट्राइब है उसको भी रेडक्लिफ ब्राउन को हम डिस्कस करेंगे। एथनोलॉजी, जो आप एथनोग्राफी कहते हो, एथनोलॉजी, that how the study of ethnic people, there are different ethnography written by many anthropologists, तो यहाँ पे हम लोग इनकी contributions रेडक्लिफ ब्राउन के perspective में पढ़ेंगे। फिर जो लोग comparative sociology and anthropology को पढ़ते हैं तो रेडक्लिफ ब्राउन must, because to understand the structural functionalism, and within that concept that eunomia and dysnomia वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे with respect to the social structure and its function. So today we'll discuss what is structural functionalism according to Radcliffe Brown. Radcliffe Brown के हिसाब से जो सामाजिक संरचना है वो एक सेंट्रल प्लेस, उसी को लेके फंक्शन की बात करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर, that is the fundamental central place
तो उनकी फंक्शन को समझने के लिए so it is also important to understand that how the social structure is important. और सोशल स्ट्रक्चर की जितने भी कंपोनेंट्स हैं, किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन की डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है बिकॉज दे आर इंडिस्पेंसेबल ईच अदर. तो कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन को हम सेपरेट करके नहीं देखते हैं. इट हैज ए रिलेशनशिप विद द सोशल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस. तो ये जो एग्जिस्टेंस, ये जो डिपेंडेंसी विथ ईच अदर, that becomes important way to understand the integration of the society or the organic entity. तो इसका मतलब जैसे हम लोग बॉडी को समझते हैं, जब पूरी बॉडी को समझना है तो डिफरेंट पार्ट्स है, सो डिफरेंट पार्ट्स की फंक्शन कंप्लीट बॉडी को एक्सप्लेन करता है. तो ये जो टोटल बॉडी को समझने के लिए हर बॉडी से जुड़ा हुआ डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट ऑर्गन्स, इनकी भी फंक्शंस जस्टिफाई करता है पूरी ह्यूमन बॉडी को. सो इफ यू कंसीडर the total body of human being is a structure and there are different body parts, but every body part has its own function to justify the total function of the body. So that means that how the social structure have indispensable functions for one another. That means the existence of social structure is important from its functional perspective because it is helping to make it one entity or integrated or society as a whole. If you say that how this idea of the social structure of Radcliffe Brown is different from the idea of the Levi-Strauss or Durkheim. तो यहाँ पे एक एम्पिरिकल रियलिटी की बात करते हैं जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं. इट इज नॉट सिंपली ए मॉडल एज इट इज अंडरस्टूड बाय लेवी-स्ट्रॉस. आपको याद रखना है लेवी-स्ट्रॉस की आइडिया, इट इज कंप्लीटली ए वर्क विदाउट एनी ग्राउंड या फील्ड वर्क. तो इनकी सारी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड इट्स फिलोसॉफिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सोशल स्ट्रक्चर, बट Radcliffe Brown idea of structure is part of an empirical reality because it has a relationship with the real sense of that how it is functioning in a behavioral sense, in a psychological sense, how it is patterned with an empirical observation. तो ये सारे situations को लेके field work based में जब हम social structure को समझते हैं, so that is one important way to differentiate from idea of Durkheim's or Levi-Strauss. So Levi-Strauss की social structure is not here important. Why? Because here the social structure is empirically patterned and normal, and that is why all the social relations, that means all the social activities that are accepted on the basis of the rules and norms. तो यहाँ पे जो समाज की जो मेंबर्स हैं, वो सारे मेंबर्स अपने रूल्स और रेगुलेशंस को मानते हुए सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन किया. ये कोई मॉडल नहीं है, ये कोई फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है, ये कोई इमेजिन्ड स्ट्रक्चर नहीं है. दिस स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय द मेंबर्स थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन बाय द सोसाइटी. तो ये जो सिचुएशंस, ये जो तरीका है रेडक्लिफ ब्राउन, that how to understand the social structure on the basis of that how it is attached to the society in the relations to its functions and how the rules are binding the society members to justify the social structure. तो ये जो सामाजिक संरचना है, उसको समझने के लिए उससे जुड़े हुए लोग उनकी एक्टिविटीज के माध्यम से उस स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करते हैं, and that is the way the functions became important because social structure उसी फंक्शन के माध्यम से उनको जोड़ के रखा है जो मेंबर्स अपनी एक्टिविटीज को करके उस स्ट्रक्चर को बनाए रखें. देन व्हेन यू स्टूडेंट्स, आज हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को इंट्रोड्यूस किया फ्रॉम रेडक्लिफ ब्राउन पर्सपेक्टिव. विल कंटिन्यू इट फॉर नेक्स्ट लेक्चर इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू फॉर वाचिंग DHAL SIR क्लासेस.